Good evening, everyone. I, CA Puru Sharma, along with CACS LLB Amreen Alwani, will moderate today's webinar. We are delighted to welcome you all in the webinar being organized by Continuing Professional Education, that is CPE Committee of ICAI. It is our pleasure to be given an opportunity to moderate the webinar on Dynamic Project Report in Excel and Personal Finance, Importance of Investing in Equity. In a short while, we'll start this webinar. I should like to apprise you about CPE committee. The role of chartered accountant is evolving continuously to accept newer responsibilities in a dynamic global environment. The future of CA profession depends on being flexible and open to innovation. Therefore, the need of the hour is to innovate as the requisites of the contemporary business environment and accordingly upgrade the curriculum and education system of chartered accountancy course. The committee also believes that member of ICAI should look beyond the traditional areas of practice and seek and explore newer areas of business and profession. And hence, the CPE committee is mentoring the members by providing guidance through various workshops, seminars, national conferences, background materials, etc., and simultaneously by encouraging young and dynamic professional to grow as speaker or master of ceremonies, etc., in CPE programs. We are pleased to inform that ICAI is organizing its first ever Global Professional Accountant Convention, that is GLOPAC, on the theme Connecting the Globe, Creating Value from November 24 to November 26, 2023 at Mahatma Mandir Convention Center, Gandhinagar, Gujarat. GLOPAC is being celebrated as a mega event to display the important role that the accountancy profession has been playing in building stronger and more stable economies around the globe. It would provide an opportunity to the global market to network with the best finance and accountancy talents in India. So I would like to play the GLOPAC teaser. Yes, Ajit. The Institute of Chartered It gives me immense pleasure to announce that the Institute of Chartered Accountants of India has decided to organize its first ever Global Professional Accountants Convention, GLOPAC, on the theme Connecting the Globe, Creating Value on November 24th to 26th, 2023 at the Mahatma Mandir, Gandhinagar in India. GLOPAC is being celebrated as a mega event to showcase the important role that the accountancy profession has been playing in the economic and social development of our country. Globalization has made the world one village, and the services of chartered accountant are also available globally without any boundaries. The Institute of Chartered Accountants of India is also devoting significant efforts towards global networking. The convention shall be attended by more than 3,000 delegates from around 40 countries. I would like to extend a warm welcome to the fraternity on behalf of ICAI to attend and participate in the first ever GLOPAC. ICAI is geared up to welcome delegates from across the globe
at the GLOPAC. Guruji, we have our respected Vice Chairman Gyanchand Mishra, sir. Basically, sir has taken out Yes, time from his busy schedule. Welcome, sir, Gyan sir. thank you, So, thank you. Good formally we are afternoon starting. to all Puri, the respected speakers. sir. Guruji is the moderator, sir. I heartily welcome CA Gyan Chandra Mishra ji, the Vice Chairman of CP Committee and Chairman of Insolvency and Bankruptcy Board of ICAI. Presently, he's serving the Institute of Chartered Accountant of India as a Central Council member and convener Tender Monitoring Directorate of ICAI. He has more than 24 years of professional standing to his credit as an established chartered accountant. Under his vision, this year, the CPE committee taking new initiatives for members. So I welcome you, sir. Please. Thank you. So thank you, Guru. Good afternoon to all the respected speakers of the today's program, Ashava ji and the other one, Badani ji, moderators of the program. Friends, we all know that CP committee is continuously working for the knowledge updation of the members at large. And two CPRs program, which is unstructured, being done on every Wednesday, that is 3 to 5. And today's this topic being undertaken is very important, that is dynamic project report in Excel and personal finance. We all know that chartered accountants have been privileged in practicing in the banking as another core area of practice, and project finance being integral part of banking segment. So we will understand today the dynamic project report, how we can prepare in the Excel, and personal finance with a special emphasis to the stock market. That is also very important. To earn the money is one part, and to retain the money and to get well invested the other part. So both the topics are very important, and I'm sure that all the members will get the benefit of the learned speakers, and we shall excel ourselves not only in the project report of Excel but in our professional career by having such learning sessions. And without taking much time, I'll request that members please get yourself registered for GlowPack. We have just seen the video because we are having this first time in the country that the international word have been removed, and we are expecting about 7,000 accounting professionals who are going to join globally in this event. So you please register as soon as possible. My good wishes to all the participants, and we commit ourselves that we will coming up with new topics, new ideas, and new learning sessions. Thank you, Ajit ji, for organizing such wonderful webinars in the interest of the members. Always your dedication is commendable. Thank you. Thank you, sir, for joining us. I know, sir, you are very much busy. In fact, I was telling to Guruji, I requested you to please join, in inaugural session at least, so that members can get benefited by your work, sir. Thank you very much, sir, for coming. Thank you, Ajit ji. Thank you. So the program for this evening is as follows. We have two sessions of 1 hour each, and the topics are the first session. The topic for the first session is dynamic multipurpose project report in spreadsheet. And for the second session, the topic is personal finance and importance of investing long-term in equity market. So now I would like to now I would like to welcome our first speaker, CA Shiv Bhagwan Asawa ji. He did his BCom honors from Calcutta University and is into practice in financial services since 1997, the year in which I was born. He also did executive MBA from IIM Kolkata in 2009. He had 28 years of post-qualification experience in the areas of project appraisal, financial consultancy, raising of funds through debt and equity. He also became chairman of Thane branch in the year 21-22. Over to you, sir.
So you're not audible. You have to first unmute yourself. We can't hear you, sir. No, sir. Sound is not coming. Hello, Now audible. Yes, sir. audible, no? Let me first my sincere thanks to Puruji for your kind introduction, and let me go to my presentation because time is very short. First, let me try with screen share. If it is okay, then we can go ahead with my presentation. Let me do the screen sharing. It started, sir. I think there is one Excel sheet is visible on your screen, Yes, sir. and uh, then one, I think I have to do PPT also. Is it PPT is also showing on the screen? Yes, sir. It's visible. You have to maximize it. It's visible. Yeah. Yeah. So round of applause for all participants. Now I have to see alternate. Now Excel is visible. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Excel is Okay. visible. Okay. Let me go with my presentation first. Thank you all participants. Very important session. See, this should have been given little bit of more time, but anyway, we have to cover it within given time. As a chartered accountant, we are used to that. uh, Within timeline we have to cover the subject. And before I start, there's a disclaimer. These are opinions expressed in this presentation about preparation of project financials are solely those of the presenter and do not represent the view of any financial institution or for that matter ICAI. And normal disclaimer, let we start with project financials. What I will do, there are 12 to or 13 steps. If you follow in a simple spreadsheet, you can prepare 28-30 page project financials within few minutes. It will not take much more than 20 minutes. And that project report which we are going to prepare will be such a dynamic and multi-purpose that you can change any figure and any ratios, and project report will automatically have everything tallied and final balance sheet will also tally. So you don't have to scratch your head for any changes भाई कहाँ change नहीं हुआ कहाँ नहीं हुआ इसमें इतना dynamic बनाया गया है. And these are my proprietary Excel solution जहाँ आप कहीं भी कुछ भी चेंज करें हम चेंज करके भी देखेंगे कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. तो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में पहला स्टेप होता है कि these are the tables prescribed by our financial institute. Originally, it was promoted by IDBI Bank. They have IDBI as institute. They have given a guidelines how you should be preparing project financials to be presentable to bankers. I am covering Excel part of it. तो फर्स्ट एक टेबल में अपने को तीन चीजें बनानी है. कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, means of finance and calculation of contingency. ध्यान रहे, except margin money for working capital, you have to cover all three. We will cover in first step all three tables. I will go to Excel and show you how you can cover it. This is my live Excel sheet. I believe that it is visible to all. से यहाँ डमी डेटा ले रखा है, इसको चेंज भी करते हैं अपन. लैंड एंड साइट डेवलपमेंट 5, बिल्डिंग एंड सिविल वर्क से 12, तो अपन लैंड एंड को उसको 6 कर देते हैं, चेंज कर देते हैं इसको. ये 6 कर दिया. बिल्डिंग एंड सिविल वर्क लेट इट बी 12. लेट मेक प्लांट एंड मशीनरी 15, मिसलेनियस 1 crore एंड प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस से 2 crore.
तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अभी मीन्स ऑफ फाइनेंस, इसके बाद नेक्स्ट टेबल है मीन्स ऑफ फाइनेंस, उसके नीचे ही बनाना है। So you have to decide. You can get maximum 75% of your capital investment in a project by your bank loan. Certain bank says कि नहीं, land and building का हम 60% ही देंगे, plant and machinery का 75% देंगे. Then your client, those who are promoting that project, they will give you figure कि roughly अपने को 50% लोन चाहिए कि 60% चाहिए कि 75. Based on your client's feedback, you can design means of finance. मीन्स ऑफ फाइनेंस में मैंने इस केस में डिसाइड किया है कि अपन दोनों का 75% लेंगे, अपन चेंज भी कर देंगे। देखिए डायनामिक कैसे है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 47 एंड योर मीन्स ऑफ फाइनेंस इज ऑटोमेटिकली 47। नाउ लेट मी चेंज माय टर्म लोन पोर्शन। टर्म लोन पोर्शन को 75% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मिसलेनियस फिक्स एसेट एंड लेट्स से 60% ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो आपका टर्म लोन का फिगर चेंज हो गया, बट आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स ऑफ फाइनेंस स्टिल टैली। एंड इसमें देखिए ध्यान रखिए, हमने एक अनसिक्योर्ड लोन क्वासी इक्विटी लिया है फ्रॉम प्रोमोटर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। कभी भी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए तो आपको ध्यान रखना है कि सम पोर्शन बाय फ्रॉम प्रोमोटर्स शुड कम बाय ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। व्हाई सच? बिकॉज क्या है कि आपका टैक्स पेड मनी जो सेविंग था वो आप प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं, एंड प्रोजेक्ट अगर अच्छा काम करे, अच्छा रिजल्ट दिखाए, आप चाहते हैं कुछ पैसा आप वापस घर ले जाना चाहते हैं या दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो पैसा कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? हाउ यू कैन विड्रॉ फ्रॉम ए project say excess earning earned from that project. If you wish to withdraw, you can withdraw. If you don't provide unsecured loan or quasi-equity, then you have only two options. One, you can give director's remuneration. Second, you can give dividend. But as you chartered accountant, you know whether you give director's remuneration or you give declare dividend. Both the cases you have to pay again tax for withdrawing money from the project. तो एक बार आपने टैक्स पे करके जो आपकी सेविंग थी प्रोजेक्ट में डाला है, और वहां से आपको पैसा विड्रॉ करने टाइम वापस टैक्स भरना पड़ रहा है, इट इज डबल टैक्सेशन वैमी। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सम ऑफ द पोर्शन ऑफ promoters contribution should be by your unsecured loan or quasi equity, so that if excess earning made, you can withdraw that unsecured loan without paying any tax. That's why some portion of promoter contribution should be by way of unsecured loan. Another advantage, it is legitimate way of doing tax planning. You know, as a chartered accountant, आपके promoters family में कुछ ladies है या कोई HUF है जिसमें आपके पैसे पड़े हैं, and उस HUF में आपको ध्यान में होगा, या तो you can invest in share market, get share trading income, or you can invest in a property, you can gain trade income. Other than that, you don't have much more option. As a HUF, you cannot do business. And as a, say, in your family, there are maybe housewife, they don't have any other income. तो ये पैसा अगर हम प्रोजेक्ट में लगा देते हैं एज ए अनसिक्योर्ड लोन और क्वासी इक्विटी, ऑफ कोर्स बैंक विल आस्क फॉर सबऑर्डिनेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वासी इक्विटी फ्रॉम प्रोमोटर्स और प्रोमोटर्स फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। सपोज मैंने 5 करोड़ रुपया मेरे 4 जो आइडल फाइल है जिसमें रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसमें से 2 करोड़ रुपया मैंने इसमें डाल दिया, 50-50 लाख के 4, एंड आई हैव डिसाइडेड टू पे देम 10% ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो 50 लाख में अगर आप 10% इंटरेस्ट रेट देंगे तो 5 लाख रुपया पर फाइल देंगे, 4 फाइल में आप 20 लाख रुपया इंटरेस्ट देंगे। ये 20 लाख रुपया आपके प्रोजेक्ट में लेजिटिमेट एक्सपेंसेस है, यू डोंट हैव टू, यू विल सेव दैट मच ऑफ टैक्स। बट ये 20 लाख रुपया जो इनकम आपके आइडल फाइल जो नॉन वर्किंग और नॉन इनकम जनरेटिंग मेंबर है, उनके फाइल में ये 5-5 लाख रुपए का इनकम आ जाएगा, दे डोंट हैव टू पे टैक्स। इवन 7-8 लाख में भी अगर कुछ सेविंग कर लिया तो टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाई, तो वन साइड यू आर सेविंग टैक्स इन योर प्रोजेक्ट, अदर साइड you are generating income on those idle file where you don't have to pay tax. So double benefit. That's why unsecured loan some portion रहना चाहिए, and bankers generally reasonable amount of unsecured loan को quasi equity मानते हैं। तो ये टेबल दूसरा टेबल का खत्म हो गया। अब है कैलकुलेशन ऑफ कंटिजेंसी। फर्स्ट,
why calculation of contingency or contingency amount should be in your project cost. You know, जब बैंक आपको सैंक्शन करती है, आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दिया, सपोज आपने 20 करोड़ का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दिया, उसमें कंटिजेंसी रखा नहीं, और 20 करोड़ के प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपने डिसाइड किया कि भाई 15 करोड़ का 75% हम टर्म लोन लेंगे, बट कोई कारण से सपोज और 5 करोड़ प्रोमोटर लाएगा, बट कोई कारण से प्रोजेक्ट 22 करोड़ रुपया हो गया या 21 करोड़ रुपया हो गया, तो टर्म लोन सैंक्शन में एक कंडीशन ये रहता है कि if there is any overrun to the project cost, if there is any overrun to the project cost, promoter has to bring it. तो अगर 20 करोड़ और आपने कंटीजेंसी रखा नहीं और 21 करोड़ हो गया, तो 1 करोड़ रुपया प्रोमोटर को एडिशनल लाना पड़ेगा. समटाइम्स योर क्लाइंट, those who are promoting the projects, may come into difficulty. That's why I always suggest this calculation of contingency. अभी कितना परसेंटेज कंटीजेंसी है, that you have to decide. कंटीजेंसी किस पे ऊपर होगा, जितना आपने एक्सपेंसेस इनकार करना, जो एक्सपेंसेस भविष्य में आप इनकर करने वाले, उसके ऊपर ही कंटीजेंसी हो चुकी है, कंटीजेंसी होगी. जो ऑलरेडी आप इनकर कर चुके हैं उसको कॉस्ट फ्रीज हो चुका है. इन आवर केस आपने एज्यूम किया भाई लैंड 3 करोड़ में इन्होंने खरीद लिया, तो ये तो कोई कंटीजेंसी है नहीं, बट जो बिल्डिंग बनाएंगे या साइट डेवलपमेंट करेंगे, 3 करोड़ का खर्चा एस्टिमेट किया है, तो उस हिसाब से सम पोर्शन कंटीजेंसी. और कंटीजेंसी आपको मालूम है, सपोज योर प्रोजेक्ट नीड इंपोर्टेड मशीनरी. अभी इंपोर्टेड मशीनरी में सपोज डॉलर का प्राइस फ्लैक्चुएट होता ही है, डॉलर बढ़ गया तो आपका इंपोर्टेड मशीनरी कॉस्ट बढ़ सकता है. आपके सीमेंट स्टील का प्राइस बढ़ गया तो आपके बिल्डिंग में एडिशनल कॉस्ट लग सकता है. सी आपने 20 करोड़ का प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया और आपका प्रोजेक्ट 18 करोड़ में ही कंप्लीट हो गया, बैंक 75% देगा, बैंकर विल बी वेरी हैप्पी. बट आपने 20 करोड़ का प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया और ये 22 करोड़ का हो गया, तो एज पर देयर सैंक्शन टर्म एनी ओवरऑन टू द प्रोजेक्ट कॉस्ट यू हैव टू बॉर्न बाय द प्रोमोटर्स. तो हमने इस केस में एज्यूम किया कि सबका 5% कंटीजेंसी लेंगे और अकॉर्डिंगली 1.65. कंटीजेंसी कितना होगा दैट यू हैव टू डिसाइड. तो अगर आई हैव क्लेम दैट दिस सीट इज वेरी डायनामिक, सपोज आपके क्लाइंट बोलता है नहीं प्लांट एंड मशीनरी में आप 7.5% या 8% दीजिए कंटीजेंसी, तो देखिए अभी 165 इज, ये येलो कलर सेल में आपको दिख रहा है 165 कंटीजेंसी, एंड दिस इज अगेन पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 165. लेट मी चेंज दिस, से सपोज आई मेक इट 8%. देखिए ये 2.10 हो गया, ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी 2.10 हो गया, प्रोजेक्ट कॉस्ट चेंज हो गया, डायनामिक है इसलिए आपका मीन्स ऑफ फाइनेंस भी चेंज हो. तो ये पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मीन्स ऑफ फाइनेंस एंड कैलकुलेशन ऑफ कंटीजेंसी. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टू कंप्लीट. और इसमें ध्यान रखना है वर्किंग कैपिटल मार्जिन जो मैंने येलो मार्क किया है ये लेटर ऑन करेंगे, एक बार पेंडिंग रखेंगे इसको. नाउ सी इन आवर पीपीटी व्हाट इज माय सेकंड स्टेप. Second step is complete the production and sales statement. You arrived at sales figure which will go working results. See आपने डिसाइड किया, इसके बाद जो टेबल बनाना है वो है प्रोडक्शन एंड सेल स्टेटमेंट. मैंने हॉरिजेंटली सब सेल बना रखे हैं बिकॉज अपने पास टाइम कम है, 1 घंटे का टाइम, आई हैव टू कवर एवरीथिंग. दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी मेड, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग लाइव. सी इसमें हमने एज्यूम क्या किया कि प्रोडक्ट ए जो है उसका प्रोडक्शन होगा 18 लाख लीटर का, ये प्रोडक्ट ए है कैपेसिटी इन लीटर, एंड प्रोडक्ट बी है, लेट एज्यूम कि भाई दीज आर some kind of production you are making, say liquid production that is in denomination liter. It can be kg, it can be tonnage, it can be meter, it can be anything. Accordingly you have to change the numer. तो इसमें हमने एज्यूम किया प्रोडक्ट ए है जिसका इंस्टॉल कैपेसिटी 18 लीटर है, 18 लाख लीटर है. प्रोडक्ट बी है जिसका इंस्टॉल कैपेसिटी 24 लाख लीटर है. वर्किंग डेज 360 है, मतलब कंटिन्यूअस वर्किंग प्लांट है, और 3 शिफ्ट है. ये सब चेंज भी हो सकते हैं. एंड बेस्ड ऑन दैट हमने एनुअल प्रोडक्शन निकाल लिया, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50, 60, 70, एंड इसकी सेलिंग प्राइस से एज्यूम किया ए का 500 है और बी का 600 है. बेस्ड ऑन दिस आई हैव अराइव्ड एट व्हाट विल बी my annual estimated sale which will go to my working results. Working results is nothing but profit and loss account. तो ये अपना सेल हो. मैंने आपको बोला मेरा सीट डायनामिक है तो हमने चेंज कर देते भाई, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 60, 70, 80 करते, तो 60 देखिए नीचे का फिगर चेंज हो जाएगा, 70
ऑटोमेटिकली नीचे का फिगर चेंज हो गया। ये डायनेमिक इसलिए कल आप डिसाइड कर सकते हैं पहला साल हम 9 महीना ही काम करेंगे, 10 महीना काम करेंगे। जो आपके क्लाइंट का डेटा आएगा उस हिसाब से आपको चेंज करना है। 360 के दिन के हो सकता है पहला साल 300 दिन ही काम हो, या 6 महीने का ही प्रोजेक्ट हो तो करीबन 180 दिन का ही काम हो। तो बेस्ड ऑन क्लाइंट्स फीडबैक, प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हो रहा है, कब कमर्शियल लॉन्च हो रहा है, उसके बेसिस पे आपको नंबर ऑफ वर्किंग डेज डिसाइड करना है। देखिए सेल्स मैंने चेंज कर दिया 60, 70, 80 और ये फिगर चेंज हो गया। और यही सेल्स फिगर हमको वर्किंग रिजल्ट्स में लाना है। वर्किंग रिजल्ट इज नॉमेनकल्चर गिवन इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, अदरवाइज इट इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये फिगर देखिए मैंने हॉरिजॉन्टली में वर्किंग रिजल्ट्स बना रखा है और वो वर्किंग रिजल्ट्स यहाँ आपको विजिबल हो जाएगा। ये सेल्स का फिगर वहां से मैंने कॉपी कर लिया है प्लस साइन करके, ताकि वहां कुछ चेंज करूं ऑटोमेटिकली सेल्स फिगर में आके चेंज हो जाएगा। ये हो गया हमारा step second, production and sales statement. Production and sales statement is nothing but arrived at what will be your annual production and what will be your estimated sales. तो पहला 3 साल का बना लिया है। जनरली 3 साल का ही बनाना रहता है। कभी कोई कारण से अगर ज्यादा बनाना है, आपका प्रोडक्शन से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ग्रेजुअली 5 साल में ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में पहुंच रहा है, तो ये स्टेटमेंट आप 5 साल के लिए बना सकते हैं। डायनामिक है, 2 कॉलम और ऐड करना है एंड वही फिगर लेना है। इवन प्रोडक्शन सेल स्टेटमेंट में अगर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आपका इंस्टॉल कैपेसिटी चेंज हो रहा है तो आप चेंज कर सकते हो। ये हो गया स्टेप नंबर 2। लेट्स सी व्हाट इज माय स्टेप नंबर 3। Step number 3 is complete the cost of production. Cost of production sheet means आपका जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट होता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज बेसिकली पर यूनिट जो आपका एस्टिमेटेड एनुअल प्रोडक्शन है उसका डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, उसमें क्या आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, स्टोर स्पेयर्स आएगा, सी आपका पैकिंग मटेरियल आएगा, पावर फ्यूल आएगा, लेबर कॉस्ट आएगा, जो फैक्ट्री लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आएंगे। तो दीज आर योर डायरेक्ट कॉस्ट। दैट शीट वी कॉल कंप्लीट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शीट। लेट वी गो टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शीट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शीट में हमने एज्यूम ये किया है, ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शीट है। रॉ मटेरियल लगेगा फॉर ए, इट इज for A it is 350 rupees per liter and for B it is 450 per liter. हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शीट से निकाल लिया है कि बी के लिए, ए के लिए 350 रुपया। तो आपने जो प्रोडक्शन एंड सेल स्टेटमेंट बनाया था उसमें आपका ए का एनुअल प्रोडक्शन आपको मालूम है, उसको मल्टीप्लाई किया 350 में, और बी का एनुअल प्रोडक्शन मालूम है, उसको मल्टीप्लाई भी किया 450 में और करोड़ रुपया से डिवाइड कर दिया, सो दैट वी गेट फिगर्स इन करोड़। अगर आपको छोटा प्रोजेक्ट है, फिगर्स इन लैक्स रखना है तो फिगर्स इन लैख कर सकते हैं। तो ये मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया। स्टोर स्पेयर्स में हमने एज्यूम किया मेरा 50 रुपया पर लीटर विल बी द स्टोर्स एंड स्पेयर्स। अकॉर्डिंगली आई हैव totaled my annual production of A, annual production of B, totaling and then multiplied by 50 divided by crore. I have got my store spares cost for annual production of A, B, accordingly 1260, then 1470 and then 1680. तो एस्टिमेटेड एनुअल प्रोडक्शन से अपने को जो फिगर आया प्रोडक्शन का उसको सिंपल मल्टीप्लाई करके करोड़ रुपीज में इसको डिफाइन करना है। पैकिंग मटेरियल हमने एज्यूम किया कि 10 रुपए पर लीटर आएगा, तो अकॉर्डिंगली अगेन आई हैव एनुअल, दोनों को एनुअल प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी को जोड़ दिया है और 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया। से पावर फ्यूल वाटर, इसमें मैंने एज्यूम किया है कि पहला साल अपने को 10 लाख रुपया पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंड उसके बाद भलाई प्रोडक्शन बढ़े बट अपना इलेक्ट्रिसिटी इज सेमी वेरिएबल, इतने स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। बट आपका अगर क्लाइंट बोलता है नहीं प्रोपोर्शनेटली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ेगा, तो आपको लेना है। बेसिकली जो भी नंबर्स आप यहाँ डिफाइन कर रहे हो उसका लॉजिकल वर्किंग्स आपके पास रहना चाहिए। एक सीट आपकी एजम्पशन की बनेगी जिसमें आपको सारे वर्किंग को डिफाइन करना है, ताकि जब बैंकर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट पढ़े
तो उसको माथा लगाना नहीं पड़े which figure is coming from where. तो इसमें एजम्पशन में लिखना है कि वी आर एज्यूमिंग 10 lakhs पर ईयर per month per year will be the electricity cost in first year and second year onwards say 10% तो मैंने इस केस में एज्यूम कर लिया भाई 10 लाख रुपया पर मंथ आएगा अकॉर्डिंगली 1.20 और उसके बाद 10% इंक्रीमेंटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ले लिया। ये बेसिकली जो भी डेटा है उसके पीछे की वर्किंग्स या तो आपके प्रोमोटर्स जो क्लाइंट है वो देंगे या फिर अगर कुछ वेरिएबल है कुछ भी वर्किंग्स है या पावर कॉस्ट में भी योर की मटेरियल कॉस्ट तो पावर कॉस्ट अगर की मटेरियल है तो उसकी एक वर्किंग रहनी चाहिए हाउ यू हैव अराइव्ड एट उसमें कनेक्टिंग लोड क्या है पिक डिमांड क्या है आपका कितना यूनिट कंजम्पशन होगा दीज आर ऑल एस्टिमेट्स एंड पर यूनिट क्या रेट है उस प्रिवेलिंग एरिया में बेस्ड ऑन दैट you can prepare your power and fuel and water cost working in a separate sheet and attach to this overall project report so that bankers who is assessing your project knows how this figure has arrived. Next is वर्कर्स लग सकता है तो मैंने इसमें एज्यूम किया भाई 50 वर्कर लगेगा 10,000 रुपया पर मंथ सैलरी देना है एंड 12 मंथ्स की सैलरी बेस्ड ऑन दैट आई हैव अराइव्ड एट व्हाट विल बी माय लेबर कॉस्ट अगेन अगर सिग्निफिकेंट पोर्शन सपोज आप एक लेदर इंडस्ट्री है बैग मैन्युफैक्चरिंग में है वहाँ सब्सटेंशियल लेबर कॉस्ट है तो एंड मेजर कंपोनेंट इज लेबर कॉस्ट तो आप लेबर कॉस्ट को भी अलग से वर्किंग बना सकते हैं कि भाई इतना स्किल लगेगा इतना सेमी स्किल लगेगा इतना अनस्किल्ड लेबर लगेगा इसको प्रिवेलिंग रेट क्या है मल्टीप्लाई कर दिया है जनरली लेबर में यू नो कि एवरी ईयर यू हैव टू गिव 10% इंक्रीमेंट तो बेस्ड ऑन दैट आई हैव अराइव्ड 60 lakhs इन फर्स्ट ईयर देन 10% इंक्रीमेंट फैक्ट्री स्टाफ में कौन होगा सुपरवाइजरी स्टाफ होगा इन दिस केस आई हैव एज्यूम दैट 5 सुपरवाइजरी स्टाफ 30,000 पर मंथ हम सैलरी दे रहे हैं और 12 महीने की सैलरी होगा कोई कोई कंसल्टेंट इसको 12 महीने की जगह आप 13 महीना भी कर सकते हो ये सिंपल है तो मैं सपोज इसमें 13 महीना कर देता हूँ बिकॉज 1 मंथ बोनस पकड़ लेता हूँ तो अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली ये सब चेंज हो गया इसको भी 13 महीना कर देता हूँ सुपरवाइजर को ये आपका लेबर कॉस्ट हो गया फैक्ट्री ओवरहेड्स मैंने एज्यूम किया इंश्योरेंस एंड this will be 0.5%, 0.05% of your project cost will be your insurance expenses. Generally आपको ध्यान में होगा इंश्योरेंस में कोई भी आप फैक्ट्री सेटअप करो फैक्ट्री लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस निकालो तो पहला 3 साल में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इंश्योरेंस प्रीमियम में फर्क नहीं होता है वही कमी बेसी वही रहता है इनफैक्ट देयर में भी सम रिडक्शन इन इंश्योरेंस कॉस्ट तो ये मेजर हेड नहीं है 9 लाख का खर्चा है तो मैंने कंस्टेंट पकड़ लिया कि हर साल 9 लाख का फैक्ट्री इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भरना पड़ेगा अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स कुछ आ सकता है फैक्ट्री के अंदर कैंटीन है फैक्ट्री का डायरेक्ट सिक्योरिटी गार्ड है या और कुछ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है तो वो हमने पकड़ा कि भी पहला साल 7 लाख लगेगा अकॉर्डिंगली 84 lakhs एजम्पशन है दीज आर द फिगर विल बी गिवन बाय योर क्लाइंट ओनली जो वो वर्किंग देगा उस हिसाब से आपको डायरेक्ट कॉस्ट को डिफाइन करके इस एस्टिमेट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डालना है सेकेंड ईयर हमने एज्यूम किया 8 lakhs एंड थर्ड ईयर हमने एज्यूम किया 9 lakhs पर मंथ मेरा डायरेक्ट ओवरहेड जो है ये होने वाला तो सबका टोटल लगा लिया तो आई गॉट माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज नथिंग बट डायरेक्ट ओवरहेड is first year, second year, third year. And this typically like manufacturing account, you have to carry forward this figure in your working result sheets. तो बाजू में मैंने working result sheets किया ये फिगर जो है ऑटोमेटिकली यहाँ फिगर आ गया मैंने येलो मार्क कर दिया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा उसके बाद ये भी बढ़ जाएगा तो आपको ये पहला 3 साल का रखने के बाद यू कैन एज्यूम कि देयर विल बी इन्फ्लेशन इंडेक्स तो आपका ऑप्टिमम कैपेसिटी होने के बाद भी थोड़ा बहुत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमने एज्यूम किया कि 5% से मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा इसको कंपेंसेटरी क्या एजम्पशन लेना है आपने अगर एज्यूम किया भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन प्राइस हर साल 5% बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यू हैव टू also assume that your selling price will also get increased by 5%. अगर आपने 10% माना है तो selling price को भी 10% मान दीजिए ताकि there is a parity of comparison between cost of production and your sales figure. तो ये हो गया पहला 3 साल तो मैंने डायरेक्ट ले लिया और उसके बाद मैंने 5%
इंक्रीमेंट कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के आपको वर्किंग रिजल्ट्स बनाने हैं, बैलेंस शीट कितने साल की बनानी है, या कैश फ्लो कितने साल की बनानी है। इसका सिंपल फॉर्मूला है, जितने साल का आपका टर्म लोन है उतने साल के तो आपको बनाना ही पड़ेगा। सपोज 7 ईयर्स रिपेमेंट है तो 7 ईयर्स के लिए आपके ये सारी चीजें 7 साल की बनेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3 साल, और प्रोडक्शन एंड सेल स्टेटमेंट जब तक ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होता है तब तक का आपको बनाना है। तो अगर 5 साल में ऑप्टिमम आ रहा है तो 5 साल तक का आपका प्रोडक्शन सेल स्टेटमेंट बनेगा। 5 साल में 3 साल में होता है तो 3 साल का प्रोडक्शन सेल स्टेटमेंट बनेगा और एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनेगा। इसमें कोई ऐसा कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, इट कैन बी वेरिएबल। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितने साल के आपका ऑप्टिमम कैपेसिटी जब तक नहीं होता है तब तक का बनाना है। फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अभी इनडायरेक्ट ओवरहेड आ गया। हमने सैलरी माना कि भाई 5 लाख रुपया पर मंथ ऑफिस स्टाफ की सैलरी होगी तो 60 और फिर 10% इंक्रीमेंट दे दिया। फिर हमने सोचा जो डायरेक्टर्स है प्रोमोटर साइड से वो भी साल में 4 लाख रुपया पर मंथ लेके जाएंगे तो 48 उनको भी इंक्रीमेंट दे दिया। और टेलीफोन, ऑफिस स्टाफ वेलफेयर, स्टेशनरी, कुरियर, प्रिंटिंग, जितने भी ऑफिस का खर्चा है हमने एज्यूम किया 3 लाख पर मंथ, अकॉर्डिंगली 36 lakhs, and I have also given increment of 10 lakhs in each. Based on this, I have got total administrative expenses, selling and distribution expenses. It depends on, आपके प्रोमोटर बोल सकता है, कई बार ये सेल्स फिगर के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एज्यूम किया 5% ऑफ सेल्स विल बी माय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इट कैन बी लोअर, इट कैन बी हायर। सपोज आपका क्लाइंट जो है वो यार्न मैन्युफैक्चरिंग में है, यार्न मैन्युफैक्चरिंग में मुझे मालूम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज 1.5% ऑफ सेल, कारण आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। या अदर खर्चा पकड़ के 2% ऑफ सेल में भी और खर्चा, तो आप 2% कर लीजिए। इन दिस केस आई हैव एज्यूम 5%, बट सिंपल फॉर्मूला यू कैन चेंज इट टू 2%। तो ये सेल्स फिगर मैंने पहले ले लिया था, उसको भी देखिए मैंने 5% से चौथे साल से इंक्रीमेंटल सेल्स पकड़ा, बिकॉज ऑफ सी वॉल्यूम वाइज तो हमने ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर लिया तो देयर विल बी नो वॉल्यूम ग्रोथ, बट देयर कैन बी प्राइस ग्रोथ। तो हमने एज्यूम किया 5% की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और 5% सेल्स से बढ़ेगा। तो ये सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। वी केम इनटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दिस इज नथिंग, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये सिंपल फॉर्मूला देके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना दिया। नाउ सी व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, कंप्लीट द वर्किंग रिजल्ट्स, पेज 1 जो हमने बना लिया है अप टू सेल्स ने। 5वां नंबर स्टेप है कंप्लीट टर्म लोन चार्ट टू अराइव एट इंटरेस्ट रिपेमेंट। से एज्यूम करते हैं कि जो टर्म लोन हमने प्रोजेक्शन में दिखाया है इसको हम 1+6 ईयर्स में रिपे करें। तो चॉइस 24.38 का हमारा टर्म लोन है। लेट वी एज्यूम दैट 1 year moratorium, because during construction period you obviously you don't have money to pay to the bank, बिकॉज जब आपका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, रेवेन्यू जनरेशन चालू होगा, तभी से आप टर्म लोन का रिपेमेंट कर सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन योर गेस्टेशन पीरियड यू कैन डिसाइड इट इज 0.5 months प्लस 6 ईयर, 7 ईयर। अभी जैसे स्कूल का प्रोजेक्ट है, हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है, जनरली रिपेमेंट पीरियड बिकम्स 10 ईयर, बिकॉज इसमें ब्रेक इवन आने में 2-3 साल लग जाते हैं। तो बेस्ड ऑन योर क्लाइंट फीडबैक एंड क्लाइंट्स नेचर ऑफ इंडस्ट्री यू हैव टू डिसाइड व्हाट विल बी योर रिपेमेंट शेड्यूल। तो हमने एज्यूम किया है कि भाई इन दिस केस इट विल बी 1+6 years। तो लेट गो टू द टीएल चार्ट। मैंने सब हॉरिजॉन्टली चार्ट बना रखा है। देखिए इस टीएल चार्ट में भी सीधा सीधा फिगर जो है ये 24.38 ऑटोमेटिकली वहां से आ गया है, बिकॉज प्लस फॉर्मूला देके मैंने उसी सेल को यहाँ इंसर्ट कर दिया। एंड हमने डिसाइड किया कि 1+6 ईयर्स है, इंटरेस्ट रेट इज 9% एंड देयर इज नो रिपेमेंट इन फर्स्ट ईयर। उसके बाद चॉइस क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, तो हमने चॉइस क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट डिफाइन कर दिया, सो दैट एवरी ईयर का आपका रिपेमेंट शेड्यूल आ गया, एवरी ईयर का आपका इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया। ये 6 साल के लिए मैंने बना लिया। तो 6 साल में देखिए लोन हो गया नील। फर्स्ट ईयर मोरेटोरियम प्लस 6 ईयर्स। तो ये फिगर टेबल भी हमने कंप्लीट कर लिया। स्टेप नंबर 5। नेक्स्ट सी व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज
अब जाके आपका पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया है, तो देन यू हैव टू अराइव एट वर्किंग कैपिटल लिमिट रिक्वायरमेंट। सी आपका प्रोडक्शन डिसाइड हो गया, सेल्स डिसाइड हो गया है, देन यू हैव टू नाउ वर्किंग फॉर मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल। स्टेप 1 में जो मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा था, तो वो टेबल अभी बनाएंगे, मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल। तो मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल सिंपल है, आपको दिखाता हूँ, टेबल मैंने बना रखा है रेडीमेड। ये मेरा फर्स्ट ईयर जनरली सीसी लिमिट आपको मालूम है 75% योर स्टॉक एंड बुक डेट्स माइनर नेट ऑफ संडी क्रेडिटर्स विल बी सैंक्शनड बाय बैंक। तो आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि आपका क्या स्टॉक रहेगा, क्या बुक डेट्स रहेगा, कितना उधारी मिलेगी। बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू अराइव एट नेट करंट एसेट एंड यू हैव टू गिव मार्जिन ऑफ 25% सो दैट यू नो कि वर्किंग कैपिटल मार्जिन की रिक्वायरमेंट कितनी है और सीसी लिमिट कितनी जरूरत पड़ेगी जब हमारा कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो ये सीसी लिमिट लाइव डिसबर्समेंट आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जब ट्रायल रन और कॉमर्शियल प्रोडक्शन होगा तभी बैंक डिसबर्स करेगा, बट आपको असेसमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ ही देना है। तो ये मैंने असेसमेंट किया कि मेरा 1 महीने का रॉ मटेरियल लगेगा। अब मुझे मालूम है मेरा साल भर का रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है। आधा महीने का मैंने फिनिश गुड्स पकड़ा, 1/4 महीने का स्टॉक्स इन प्रोसेस पकड़ा, मैंने उधारी पकड़ा है डेटर्स, और डेटर्स में मैंने 40% मार्जिन पकड़ा है। सम बैंक्स गिव यू 75% ऑफ डेटर्स फंडिंग, सम बैंक इंसिस्ट नहीं, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी जुड़ा हुआ है तो हम 60% ही देंगे, मार्जिन मनी आपसे 40% लेंगे। 40% मार्जिन के हिसाब से मेरा टोटल कितना डेटर्स होगा वो मैंने निकाला है। सी आप डायनामिक है, इसको अगर आप 25% करेंगे ऑटोमेटिक सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये मैंने 25% किया तो मेरा बैंक फाइनेंस अमाउंट बढ़ गया, अनलेस मैंने एज्यूम किया कि मेरे को उधारी भी 1 महीने का मिलेगा। तो बेस्ड ऑन दैट आई नो टोटल सिंडिकेटर्स एंड बैंक कितना फंड नहीं करेगा। बेस्ड ऑन दैट आई हैव अराइव्ड एट net current asset of 30 crore and 23.21 crore will be CC limit by sanctioned by your bank. CC, the bank will sanction CC limit, and rest this is my promoter's contribution. This 7.74 crore should be part of your project cost. Please remember, because ये 7.74 विल बी पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये बहुत सारे कंसल्टेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो प्रोजेक्ट कॉस्ट में मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल, दो इट विल बी नॉट फंडेड बाय बैंक, बट योर क्लाइंट शुड बी अवेयर ऑफ जिस दिन कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन हमको लाना है। आप नहीं तो ऐसा नहीं हो जाए कि 1 साल बाद जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है और आपके प्रोमोटर जो है, आपके जो क्लाइंट है, उनके पास कोई पैसा ही नहीं बचा, बिकॉज बैंक बोलेगा भाई 75% हम देंगे, 25% तो आपको लाना है। तो वो 25% आपको अपफ्रंट, सॉरी थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है। तो ये 7.74 देखिए मैंने ये प्रोजेक्ट कॉस्ट में आ गया। अभी ये वर्किंग कैपिटल मार्जिन 7.74, दिस विल बी नॉट फंडेड बाय बैंक, प्लीज रिमेंबर, बट योर क्लाइंट, योर promoter of the project must be aware of कि उसको जब commercial production start होगा then what amount of money he has to additionally brought in for commercially running the production and to manage his working capital requirement। ये प्रोजेक्ट अभी वर्किंग कैपिटल मार्जिन डिसाइड हो गया, प्रोजेक्ट कॉस्ट चेंज हो गया, मेरा मीन्स ऑफ फाइनेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो गया एंड इट इज टैलिड नाउ, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स ऑफ फाइनेंस इज टैलिड। तो ये सीट बड़ा डायनामिक है, कहीं भी कुछ भी चेंज करो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल गेट चेंज। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कंप्लीट द इंटरेस्ट वर्किंग इन वर्किंग रिजल्ट शीट। सी हमने सेल्स तक बना लिया था, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जिसको हम वर्किंग रिजल्ट बोलते हैं। अब अपने को मालूम पड़ गया कितना मेरा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और कितना मेरा टर्म लोन का इंटरेस्ट है। बेस्ड ऑन दैट आई कैन कंप्लीट रेस्ट ऑफ द सीट। तो वर्किंग रिजल्ट्स में जाते हैं। वर्किंग रिजल्ट में हमने देख लिया ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक हम किए थे। अभी नाउ यू नो व्हाट इज योर टर्म लोन रिक्वायरमेंट, व्हाट इज योर प्रोजेक्टेड सीसी रिक्वायरमेंट, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेस्ड ऑन दैट ये सारे फिगर आपको क्लाइंट दे देगा या बैंक बोल देगा कि भी मेरा सीसी लिमिट में इतना % इंटरेस्ट लगेगा, टर्म लोन में इतना %,
इंटरेस्ट लगेगा। जनरली सीसी में 50 पैसा 50 बेसिस पॉइंट्स कम होता है इंटरेस्ट रेट, कई बार 25 बेसिस पॉइंट कम होता है, कई बार इक्वल भी रह सकता है। तो ये सब डेटा आपको तो क्लाइंट से मिल जाएगा। बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू अराइव दैट व्हाट विल बी इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, व्हाट विल बी इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लोन। उसके बाद डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर अवेयर ऑफ कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, मैं आपको टेबल दिखा दूंगा, बट these need not be explained. These are simple thing which you are already aware of. I don't have to say anything. डेप्रिसिएशन का आप वर्किंग करके ईयर वाइज डेप्रिसिएशन निकाल लिया, माइनस किया तो एबिटा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो आपने एज्यूम किया था उसको आपको मालूम है 5 साल में राइट ऑफ करना है, तो मैंने 5 साल में राइट ऑफ कर लिया। छठे सातवें साल सब 0-0। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, थोड़ा सीट लंबा हो रहा है तो मैं बाजू में एडिशनल वही वर्किंग को कैरी फॉरवर्ड करके ये रखा। उसके बाद आपको टैक्सेशन का प्रोविजन करना है। यू आर अवेयर ऑफ 25% टैक्स है कि स्टार्टअप है, 15% है कि 22.5 है, जो भी प्रिवेलिंग टैक्स रेट है। पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो पूरा पूरा 30% टैक्स लगेगा। बेस्ड ऑन डेट आपको टैक्स का प्रोविजन करना है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। आपका नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करना है, तो आपका डेप्रिसिएशन और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ इज योर नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो रिटर्न प्रॉफिट ऐड दोज नॉन कैश एक्सपेंसेस अगेन, तो यू नो व्हाट विल बी योर कैश प्रॉफिट व्हिच आई कॉल्ड नेट कैश एक्विवलेंस। उसके बाद सिंपल सिंपल सारे रेशियो है, फॉर्मूला देके करना है, कोई डेटा इंसर्ट करना नहीं है। ऑटोमेटिकली दिस शीट विल कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यू अवेयर ऑफ, कितना मेरा कैश जनरेट हो रहा है, कितना मेरा इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का कितना गुना मैं कैश प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। डेट इक्विटी रेशियो यू आर अवेयर ऑफ, मेरा इक्विटी नेटवर्थ के सामने डेट क्या है, तो ये दिस इज डेट इक्विटी रेशियो। एसेट कवरेज रेशियो, बैंक ने जितना टर्म लोन दिया उसके सामने उसको प्रोजेक्ट में डायरेक्ट जो फिक्स एसेट्स बनी है उसका क्या कवरेज है। इसमें ध्यान रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ध्यान रखना चाहिए, इट शुड ट्रेवल इन ए नैरो बैंड। आपका ऐसा नहीं हो सकता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट फर्स्ट ईयर 8 है, दूसरे साल 10 है, फिर 12 है, फिर 9 है, फिर 6 है। जनरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुड ट्रैवल इन ए नैरो बैंड। जैसे यहाँ पर 8.1 से लेके 8.28 इज द हाईएस्ट पर्सन। एंड प्रोजेक्शन जब बना रहे ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट शुड बी इन ए इंक्रीजिंग ट्रेंड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी इन नैरो बैंड एंड नेट प्रॉफिट विल बी ऑलवेज इंक्रीजिंग ट्रेंड। फिर ये बाकी सब चीजें तो फॉर्मूला से लेके आ गया, तो आपका ये टेबल भी कंप्लीट हो गया, वर्किंग रिजल्ट्स। अब क्या क्या टेबल बना सकते हैं, डेप्रिसिएशन हमने दिखाया नहीं बट वो भी एक स्टेप है। कंप्लीट द डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट, कंप्लीट द डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, you are all aware of. I will provide this Excel sheet to institute. Probably you will get those live spreadsheet and you can work on this sheet. You can modify and do prepare project financials, and mind well it will not take 20 minutes of your time if you are totally aware of by practice कि कहाँ से कैसे क्या फिगर आना है, क्या फॉर्मूला लिंक करना है। तो कोई भी प्रोजेक्ट फिनेंशियल बनाने में 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ओनली रिक्वेस्ट इज दैट यू डोंट गिव इट टू क्लाइंट। भाई क्लाइंट आ गया बिठा दिया, बोले 20 मिनट में बना के दे दूंगा, और उसको आप 20 मिनट में दे दोगे तो ही विल नॉट पे यू फीस, रीजनेबल फीस। अदरवाइज सिंपल प्रोजेक्ट फिनेंशियल बनाने में 20 से 50 हजार रुपया चार्ज करने में कोई हर्जा नहीं है। क्लाइंट को खाली इतना ही बोलना है कि भाई प्लीज कम आफ्टर 2 days, आई विल वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एंड उसके बाद आपको प्रोजेक्ट फिनेंशियल सारा दे दूंगा। आपको थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफाई करना है बैंक से, वो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा, बट माय फीस विल बी से 20,000 30,000, एंड यू कैन इन्वेस्ट 20-30 minutes and you can prepare project report and you can earn good amount of money. In fact, if you can train your employee, they can prepare this. You just go through, see all those ratios, perfect आ रहा है कि नहीं आ रहा है, then you can also submit it to your client and get good amount of fees. पूरी डीपीआर बनाने का फीस 1 लाख से लेके 5 लाख तक का होता है, डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। बट आई मीन टू से अगर आप 20-30 मिनट देके 20,000 रुपया 30,000 रुपया कमा सकते हो, विच इज ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज पर मिनट, विच इज ए गुड अमाउंट ऑफ फीस यू कैन अर्न बाय प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट फिनेंशियल। आपको ध्यान में होगा, मुद्रा लोन हो चाहे एसएमई लोन हो, स्टैंड अप लोन हो,
सब में 5-7 पेज का फिनेंशियल तो देना ही पड़ता है। एंड फीस क्लाइंट के घर में जब पैसा आता है तो वो फीस देने में भी हिचकिचाता नहीं है, दे गिव यू गुड फीस। आज सिंपल एक बिजनेस रिटर्न आईटीआर फाइल करने में 2-2, 3-3 घंटा ले जाते हैं, और उसमें भी 5-10 हजार फीस रिकवर करना इंडिविजुअल क्लाइंट से वेरी डिफिकल्ट। Your 10% client may pay you that amount of fees. Otherwise, you are competing with ITP, sales tax practitioner, income tax practitioner, advocates, and वो लोग और जो सीए नहीं हुए हैं उनके साथ आप compete कर रहे हो, and they will charge you. They will, as I have seen, people are filing return as low as 500. Here is your opportunity. You can prepare financials by this dynamic sheet. You can change, alter, एक ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लिया, उसको सेव एज करके दूसरे क्लाइंट का दूसरा डेटा डाल के बना दो, 20-30 मिनट लगेगा, एंड यू कैन गेट गुड अमाउंट ऑफ फीस। नेक्स्ट स्टेप, complete the income tax working. I am not going into all details. Then दो इंपॉर्टेंट चीज है, वन आपको कैश फ्लो बनानी है, दूसरा आपको बैलेंस शीट बनानी है। हाउ यू कैन प्रिपेयर, लेट मी शो। लेट मी गो टू, फर्स्ट गो टू कैश फ्लो। कैश फ्लो में क्या है, सोर्सेस ऑफ फंड्स है, सिंपल है। आपने जो मीन्स ऑफ फाइनेंस किया है वही यहाँ लाना है, दैट इज योर सोर्स ऑफ फंड्स। चाहे शेयर कैपिटल हो, चाहे टर्म लोन हो, चाहे क्वासी इक्विटी हो, दीज आर ऑल सोर्सेस ऑफ फंड्स, प्लस योर प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन विथ इंटरेस्ट एडेड बैक, बिकॉज आउटफ्लो में हम इंटरेस्ट और टैक्स की लाइबिलिटी दिखाएंगे। और क्या इनफ्लो होगा, जो सीसी लिमिट सैंक्शन आपने बैंक से मांगा है, these are your sources of fund. Depreciation, because it is non cash expenses, so it will be your source of fund. Cash flow में तो आ जाएगा। preliminary expenses written off, again non cash expenses, cash flow में आ गया sources of funds. means of finance, disposition of funds, कुछ नहीं है, आपके जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वहां से आपको लेना है, कितना आपका फिक्स एसेट्स है, कितना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो रहा है। मार्जिन मनी फॉर जो वर्किंग कैपिटल की सीट बनाई थी उसमें आपने अराइव किया था मेरा नेट करंट एसेट क्या है, बिकॉज बैंक लोन को अगर मैंने यहाँ दिखाया है तो मेरा नेट करंट एसेट को यूज में दिखाएगा, डिस्पोजिशन ऑफ फंड्स ये बना लिया। टर्म लोन चार्ट से आपको मालूम है कि हर ईयर फर्स्ट ईयर जीरो है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड देखिए लगातार 6 साल हमने 4.06 करोड़ पे कर दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, बिकॉज यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन विद इंटरेस्ट एडेड बैक लिया, तो आउटफ्लो में मैंने इंटरेस्ट का फिगर दिखा दिया, टैक्स का फिगर दिखा दिया। डिविडेंड अगर कुछ है, जनरली टर्म लोन जब सैंक्शन करता है तो बैंक लिखता है देयर शुड नॉट बी एनी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड टिल यू रीपे द एंटायर टर्म। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर डिविडेंड डाला हो करता है तो अपने को वर्किंग डालना है, नहीं डालना है तो आपका आ गया ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। यू नो योर कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। नाउ कैश फ्लो हो गया तो आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अगेन बैलेंस शीट इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज। आपको मालूम है आपका मीन्स ऑफ फाइनेंस से क्या होगा, तो शेयर कैपिटल वहां से आ गया, सिक्योर्ड लोन आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस जो रिटर्न प्रॉफिट है वो फिगर आ गया, टर्म लोन आपके टर्म लोन शीट से आ गया, वर्किंग कैपिटल मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल से आ गया है। जनरली वर्किंग कैपिटल पहला 3 साल जो वेरिएबल होगा वो बिठा दीजिए, चौथे ईयर से उसको फिक्स कर लीजिए, बिकॉज वर्किंग कैपिटल एज यू अवेयर कि एवरी ईयर यू हैव टू सबमिट सीएमए डेटा टू गेट योर वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन। जो अपवर्ड रिवाइज होगा कि डाउनवर्ड रिवाइज होगा वो हर साल बैंक असेस करती है, बट एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट यू हैव टू गिव देम एटलीस्ट 3 इयर्स प्रोजेक्शन। तो हमने 3 इयर्स कर दिया और 2 इयर्स, ये थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स कांस्टेंट है। संडी क्रेडिटर्स, आप मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल में आपको मालूम पड़ा था 1 महीने की उधारी आपको मिलेगी, एंड बेस्ड ऑन दैट वो फिगर मैंने वहीं से लिया है। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स इज नथिंग बट योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। यहाँ कैश फ्लो में पूरा एसेट दिखाते, यहाँ आपको नेट ऑफ डेप्रिसिएशन करके नेट ब्लॉक दिखाना है। करेंट एसेट यू नो इन्वेंट्री कितना होगा, इन्वेंट्री में 3 आइटम थी, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, तीनों को जोड़ दिया है विच केम फ्रॉम मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल। संडी डेटर्स 2 महीने का उधारी आपको देना था तो उससे डेटर्स का फिगर निकल गया। कैश फ्लो से हमने कैश फ्लो बना लिया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सब जो बचे हुए थे वो रिमेनिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट रिटर्न ऑफ ले लिया, और देखिए छठे साल से जीरो हो गया। अगर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही बनाया तो बैलेंस शीट
टैली रहेगी. लेट्स सी whether our project report is dynamic and balance sheet is getting tallied or not. तो यहाँ मैंने डिफरेंस का एक फॉर्मूला दिया है. देखिए डिफरेंस 0/0 मीन्स मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में कोई गड़बड़ी नहीं हुई. आपको एक दो चीजें मैं चेंज करके भी बताऊंगा, देखिएगा फिर भी बैलेंस शीट टैली है. अब एक दो चीजें और बनानी रहती है, वो रहती है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स. एक इंपॉर्टेंट है डेट सर्विस कवरेज रेशियो. डेट सर्विस कवरेज रेशियो नथिंग, आपका जितना कैश प्रॉफिट हुआ उसके साथ इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय कितना आप प्रिंसिपल रिपेमेंट कर रहे हैं और कितना आप इंटरेस्ट रिपेमेंट करिए, दोनों का रेशियो इज योर डेट सर्विस कवरेज रेशियो. एंड देन वन एवरेज डेट कवरेज. आपको 8 साल का कवरेज मिला है, उसका एवरेज डीएससीआर क्या होना चाहिए. आइडियली स्पीकिंग डीएससीआर शुड बी एनीथिंग बिटवीन 1.5 to 2.5 एंड इंडिविजुअल ईयर में डीएससीआर 1.25 से नीचे कोई भी साल नहीं आना चाहिए. अगर सपोज 1.10 आ गया, 1.15 आ गया, तो एक बैंक को एक शंका रहती है यार थोड़ा बहुत भी 19-20 परफॉर्मेंस हुआ तो ये हमारा रिपेमेंट नहीं कर पाएगा, अकाउंट एनपी हो जाएगा. तो आपका एक्चुअल वर्किंग करके आपको डीएससीआर देखना है. अगर डीएससीआर एवरेज दो के आसपास आ रहा है कोई बात नहीं, सपोज 3 आ गया तो आपको क्या करना है, आपको रिपेमेंट पीरियड कम करना है. भाई 3 आ गया तो 6 साल की जगह आप 5 साल कर लीजिए, 4 साल लीजिए, 2 के आसपास इज आइडिया. अगर सपोज कोई कारण से ये 100 आ रहा है तो आप रिपेमेंट पीरियड को बढ़ा दीजिए. भाई repayment is not justified the kind of earnings I have. तो आप रिपेमेंट सीरीज को 5 साल, 6 साल, 7 साल की जगह 10 साल तक ले जा सकते हैं. कई बार क्या होता है कोई कोई प्रोजेक्ट में शुरुआती दौर में आपकी अर्निंग्स अच्छी नहीं होती है, बाद में अच्छी होती है, तो आप बैलूनिंग रिपेमेंट कर सकते हैं. ध्यान रखना है कि प्रोजेक्शंस को इन्फ्लेस मतलब प्रोजेक्शंस को आपको जो फिगर एक्चुअल आ रहा है वही रखना चाहिए. प्रोजेक्शन को करके आप डीएससीआर रेशियो मत जाइए, बिकॉज क्या होगा आपने इन्फ्लेट किया, एक्चुअली वो परफॉर्मेंस होने वाला नहीं है और अकाउंट अगर एनपीए हो गया तो आपका नाम भी खराब होगा कि फलाना फलाना सीए ने ये क्लाइंट इंट्रोड्यूस किया था और ये 2 साल में ही एनपीए हो गया या 3 साल में भी एनपीए हो गया. एनपीए इज नॉट इन योर कंट्रोल. बट जो चीज आपके कंट्रोल में है, कोई भी इंडस्ट्री सिनेरियो चेंज हो गया, कोरोना जैसे कोई चीज आ गई, आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो आप क्या करोगे. बट एज सच एज पॉसिबल आप इन्फ्लेटरी फिगर दिखा के प्रोजेक्ट को बैंक से पास मत कराना. ये एक डीएससीआर रेशियो इंपॉर्टेंट है. कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट. आई एम नॉट गोइंग इनटू इंटरेस्ट ऑन रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन, हमने कर लिया है. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स. एक इंपॉर्टेंट है ब्रेक इवन पॉइंट. ये हमने सीए स्टूडेंट डेज में कॉस्टिंग में देखा था कैसे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, देन पीवी रेशियो निकाल दिया एंड फिक्स एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो एक ब्रेक इवन पॉइंट आ गया. तो ये ब्रेक इवन पॉइंट का सीट भी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता है. जनरली जब आपका ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है उसी साल का ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहिए. इन दिस केस आई हैव वर्कड आउट ब्रेक इवन ऑन थर्ड ईयर बेस्ड ऑन थर्ड ईयर वर्किंग. और एक फाइनल सीट ये मैं जनरली बना के देता हूँ. सी आप क्या करते हैं कि ये समरी फाइनेंशियल है जिसमें एक पेज पे सारे डेटा आ गए कि कितना सेल्स होने वाला है, कितना एबिटा होने वाला है, कितना इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, कितना डिप्रिसिएशन है, कितना पैट है, कितना मेरा वार्षिक कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नेटवर्थ क्या रहने वाली, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, एसेट कवरेज रेशियो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, डीएससीआर क्या है. ये एक सीट, इसके साथ अगर आप एग्जीक्यूटिव समरी जोड़ देते हो तो क्या होता है. देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट सैंक्शनिंग अथॉरिटी से सपोज इन नेशनल बैंक जीएम इज द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, जीएम ब्रांच है. बट जीएम को आप अगर 100 पेज का रिपोर्ट दे दोगे तो उसका टेबल में पड़ा रहेगा, वो बाद में देखेगा कब अलॉट करेगा कोई लोन ऑफिसर को, यू डोंट नो. इसलिए जब आप सीनियर आदमी बैंकर से मिल रहे हो तो आप उसको 3-4 पेज का दे दो, उसमें ये समरी भी जोड़ दो, तो मोटा मोटी वो देख लेगा, उसको लगेगा यस दिस इज सेलेबल, दिस इज डुएबल, दिस इज वर्केबल. ही विल गाइड हिज लोन ऑफिसर कि भाई ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिस्टर एक्स ने लाया है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राइमा फेसी ठीक लग रहा है, आप इसको प्रोसेस कीजिए, अप्रेजल कीजिए और कमिटी में लोन प्रपोजल रखिए, वी कैन लुक इनटू फॉर सैंक्शनिंग दिस काइंड ऑफ लोन. तो इतना बना लीजिए. तो ये डायनामिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपका 28-30 पेज का फिनेंशियल हो जाएगा, थोड़ा बहुत आपका प्रोजेक्ट का
एग्जीक्यूटिव समरी टाइप का बना के बैंक को दे दीजिए, तो यू आर गुड टू गो। तो अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको क्लेम किया है डायनामिक है, 5 मिनट और लूंगा, उससे ज्यादा लूंगा नहीं गुरु जी, सो दैट आई एम कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट इन टाइम। अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि ये डायनामिक है, कुछ भी आप चेंज करो ऑटोमेटिकली सब चेंज हो जाएगा। से मैं चेंज करता हूँ प्रोडक्शन एंड सेल्स स्टेटमेंट में कैपेसिटी यूटिलाइज, इसके जगह मैंने फर्स्ट ईयर करता हूँ 55, सेकेंड ईयर 65, थर्ड ईयर 75। ऑटोमेटिकली नीचे सेल्स फिगर चेंज हो जाएगा, ये सेल्स फिगर ऑटोमेटिकली वर्किंग रिजल्ट्स में चला जाएगा। आपके वर्किंग कैपिटल लोन का फिगर चेंज हो जाएगा, ये देखिए यहाँ आपका सेल्स का फिगर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, वर्किंग कैपिटल लोन का फिगर चेंज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट चेंज हो जाएगा, मीन्स ऑफ फाइनेंस चेंज हो जाएगा। बट these changes will happen automatically, and if you see then your balance sheet, कुछ भी कहीं भी कुछ क्लिक ऑफ ए बटन चेंज करो, योर बैलेंस शीट शुड बी टैलीड अगेन 0/0 डिफरेंस। कहीं भी कुछ चेंज करो, सपोज हमने डिसाइड किया नहीं लोन हम पूरे अमाउंट पे 75% लेंगे, जितना लैंड बिल्डिंग मिसलेनियस फिक्स एसेट प्लांट एंड मशीनरी, तो हमने चेंज कर दिया भाई सब पे 75% लेंगे, इसको 75। देखिए टर्म लोन का फिगर बढ़ गया मेरा, फिर भी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और मीन्स ऑफ फाइनेंस का फिगर टैली है, ऑटोमेटिकली एडजस्टेड है। एंड इफ यू सी मेरा बैलेंस शीट अभी भी टर्म लोन का रीपेमेंट चार्ट चेंज हो जाएगा, डीएसीआर चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज होने का, कैश फ्लो स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा, एंड यू हैव टू सी वेदर योर बैलेंस शीट इज टैलीड और नॉट। देखिए वापस बैलेंस शीट इज टैली। तो दिस वे यू कैन प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट फिनेंशियल in 20-30 minutes and earn good amounts of money by preparing। and आपको ध्यान रहे 10 लाख का लोन हो चाहे 50 लाख का लोन हो चाहे 5 करोड़ का हो चाहे 50 करोड़ का हो, प्रोजेक्ट फिनेंशियल्स तो यही फॉर्मेट है। हाँ 10 लाख का मुद्रा लोन है तो उसको डिटेल्स नहीं चाहिए, उसको चाहिए 5 साल का कैश फ्लो बना दो, 5 साल का बैलेंस शीट बना दो, 5 साल का प्रोजेक्टेड वर्किंग रिजल्ट्स बना दो, तो वो 4-5 पेज, और डीएसीआर एक बना दो 5-6 पेज का रिपोर्ट बैंक को लगती है, इवन मुद्रा लोन के लिए भी लगती है। एंड यू कैन चार्ज ही भाई 10,000 देके जा, आपका तो 15-20 मिनट में काम होने वाला, आपका असिस्टेंट भी बना देगा, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं, 5-6 चीजें बना के आप दे दो। आपको फीस ज्यादा मिलती है तो बड़ा करो और ज्यादा इंफॉर्मेशन टेबल सब कुछ बना के दे दो, डिपेंडिंग ऑन योर फीस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्लाइंट यू कैन कोड द फीस, you can earn good amount of money. By this I am ending my presentation part. Now if there is any question, so I can take up those questions and try to resolve your any query if you have. So we are almost close before Puruji. Hi Pragya, do we have any questions? I think we don't have any questions. So in case if you have any question, I'll apprise you of the question, sir. Sir, Ah, it's a very and wonderful. before I finish off, I am sharing my mobile number. Any participant, if you have सपोज कुछ प्रॉब्लम है इश्यूज है, यू कैन व्हाट्सएप मी, माय सेल नंबर इज 9820403876 9820403876, it become double 20403876. You can WhatsApp me, I will try to resolve most of the things. I will mail our presentation and Excel sheet to the CP committee, and from there probably they can share with you all participants. Otherwise my presentation is now over. Now hand over to Puru sir. Sir, I would like to thank you for such an informative session. You have prepared a brilliant sheet which can incorporate change with just a click of a button. Thank you very much, sir. Okay. Now I would like to invite Miss Amreen Alwani to take the session forward. Good evening, everybody. As we move on to our second session,
which is on personal finance and importance of investing long-term in equity market. I would like to introduce our today's session speaker, CA Nitesh Badani. He has done his MBA from the Indian School of Business, Hyderabad. He has 18 years plus work experience across investment banking, equity research, and private equity. He has worked across various firms in relation to the given subject matter. So I'll not take much time because we are already 5 minutes late to the session. I directly hand over to you, Nitesh sir, to take up the sessions. Thank you. Thank you so much, Amreen. I will just share. Please let me know you can view the deck. You can just confirm me. It's visible? Yes, that's visible. Okay, perfect. You can just full screen, yeah. Perfect. Thank you, Amreen. Thanks. So, hello and very good afternoon to all my fellow participants. First of all, I would like to thank our institute and Mr. Purushottam ji and Gyan Chandra ji for giving me this opportunity to present in front of my fraternity. Before I start to discuss personal finance and equity investing, I will like to take a couple of minutes and to share the reason as to why I decided to conduct this session. We started Marcellus 5 years back. Marcellus is SEBI registered investment manager, and today we are managing close to 11,000 crore through PMS for close to 10,000 Indian families. During our interactions with the investors, we realized. Okay, yeah, I will present that. No worries. So during our interactions with investors, we realized most of the investors don't have any idea on personal finance and equity investing. And remember, these investors who are investing 50 lakh with us because of regulatory requirement are obviously top 2-3% of the population in terms of economic strength. We used to wonder if financial literacy is so low, for those set of social, elites, what would be the situation for bottom of the pyramid for average middle class retail investor? And hence we launched a retail product called Meritor Q, where people can start investing through our advice with very small amount. And that gave us opportunity to talk to small investors. And our intuition was very, very correct. Most of the people have no clue on personal finance and equity investing. And hence we decided to conduct sessions on personal finance and equity investing. And we decided to start it with our CA fraternity, because I strongly believe if our country can become financially and economically strong, our CA community has to be strong. They are pillars of our country. With that background, I will take you through a few slides and follow up with Q&A. We'll love to make it an interactive session rather than a single monologue. I will just present these slides once again. Yeah. I hope it's visible. Yeah, that's visible. Yes. Yeah. So, broadly, there are 4 asset classes, which is gold, stock market, fixed assets, fixed deposits, and real estate. Now, if you look in this slide, I have shown return of all the asset classes except fixed asset, which I will come to in a while. But if you see, gold from 1990 to 2000 has delivered only 1.5% return, whereas stock market for that 10 year, for that decade, delivered 12%. FD rates, it's not available on CB, on RBI data. I expect it will be around 7-8%, not beyond that. Whereas CPI inflation in that decade was 8.6%. So virtually, if you had invested in any asset class apart from equity market, you would have lost money in real sense. Now, if we go to 2001 to 2010, story is not different. Equity market was delivered best returns. Albeit gold also delivered returns more than inflation, but equity market was much superior. The story continues, if you go forward to 2011 to 22. So overall, if you see 1990 to 2022, gold delivered 9%, equity market 13.3%, fixed deposit around 7.5% return. And remember, these are all gross numbers. If we take into account taxes and other operating expenses, stock market would deliver
far better returns. Now, the reason I have not included real estate over here, because experience of investing in real estate is varied, from people to people. Some says they have made a lot of money, but most of them, including me, we have ended up burning our capital. Obviously there was a time when equity market, when fixed real estate was at boom. People used to invest, they used to make money, and obviously people used to get greedy and they used to double down their position, invest more in real estate. And then the downturn happened and people ended up losing big time in real estate. In fact, I live in NCR region. Every fourth or fifth house over here, they neither have real estate, neither have money. In fact, they have loan on their head because builders have defaulted, and they have to yet pay EMIs. Now, moving to next slide, in continuation on from the first slide, over here, what we are trying to show is the inflation adjusted real rate of return for all the asset classes. Left hand side, the chart over here, you see someone had invested in 2013. What would have been the return if he had invested in Nifty 100 rupee? If 100 rupee would have become 183, whereas gold would have become 119, term deposit would have become 114, and residential property price index, by that time this index was developed. Again, not very sure on the numbers, the authenticity over here, but still let's take whatever is available, would have become 91. That means people would have lost money in last 10 years in real estate. Now, and on the right hand side, we have shown a typical hypothetical portfolio whereby, if our average family, divides his money, equal weighted, that means if he or she had 100 rupee, 25 rupee is invested in residential, 25 in gold, 25 rupee in equity, and 25 rupee in FDs. Overall, in that decade, they would have made nominal return of 7.6%. 7.6%, and adjusting to inflation, the return would have been mere 2.3%. Now, that is not anyone would be proud of. In fact, I would say we would have not made, or we would have not created any wealth for ourselves, for our next generation. Whereas in another scenario where someone had someone was positive on equity market, he invested more, or he allocated more of his portfolio to equity, rather than 25%, 80%, and balance in other asset class, the return, the nominal return would have been obviously much better, 12.4%, whereas an inflation adjusted, it would have been 7%. That is much better outcome compared to the portfolio one. Now, just to give some perspective, the value of compounding, value of investing long term, and returns in across asset class. Let's assume we invest 100 rupee. We invest 100 rupee in gold. Gold, on an average, if you see, has delivered 9% return. So 100 rupee invested in gold over 10 years would become 237. On 20 years, if it continue to remain gold and it continues to compound at 9%, it would have become 560 rupee. And at the end of 30 years, the same 100 rupee would have become 1,327 rupee. So that is the compounding that gold would have given to average individual who would have invested in gold and continue to remain invested over a long period of time. Whereas a same 100 rupee invested in FD, assuming we get 6% return, at the end of 10th year, 100 would have become 179. At the end of 20 year, it would have become 321. And at the end of 30 years, it would have become 574 rupees. So massive difference between FD and gold. But if someone had invested in real estate, we have put a question mark because, honestly, it's very difficult to figure out. Everyone had different experiences. It all depends upon individual skill set. Most of us have ended up burning our hands in real estate. If you have skill sets, you would have made a lot of money, but most of us have not made any significant money in real estate. Flats, lands, we have not made money. Now, what is the reason why that has been the case? And why we believe investing in real estate going forward doesn't make a lot of sense. You see, a lot of real estate people made money, people made money because a lot of cash was
transacted in real estate. Now with compliances catching up, with government becoming very aggressive on black money, government plugging all the holes where cash can be used, it is becoming a pain. It is becoming a headache to manage cash. Secondly, if you look at from taxation perspective, again, you end up paying marginal tax rate on most of the asset classes that we have already seen. Real estate is no different. You end up paying pretty high tax over there. Third, real estate is highly illiquid. Today you have a property you want to sell. You're not sure you can easily sell. And if you are in distress, then definitely you cannot sell at the market price. You might end up, pay at you might have to end up selling at very low prices. So in fact, I have a cousin, he has a property in Gandhinagar. He wants to sell, but there is no buyer. The price that is being quoted in the market, at that price, there is no buyer. So that is a big challenge, investing in real estate. And secondly, the kind of people, with whom we have to deal in real estate, not necessarily we would be very comfortable. It's highly opaque. It's not transparent. The price discovery is not transparent. The people, the middlemen over there, this is something that not many of us are comfortable dealing with it. So real estate is a big question mark. If someone has knack, they can make a lot of money, but average Joe, it's very difficult for them to make any money out of real estate. Now, if someone had invested in Nifty 50, or Sensex, which is index, if you look last 10, 15, 20, 30 years, without doing anything, just invest in Nifty 50, you would have made 12% return. So 100 rupee invested in 10 years would have become 311. In 20 years, it would have become 965. And in 30 years, 2,996. A huge difference compared to other asset classes. And remember, equity is all clean. Everything is in your name. Taxation are favorable. Long-term 10%, short-term 15%. Everything is in demat. It's in demat. It's in your name. Very safe. Whereas if you can identify a good fund manager, or you have the knack of doing your own research and investing, finding winners, and if you can compound rather than 12%, you can compound at 16%. Look at the value of 100 rupee. 100 rupee at the end of 10 years becomes 441. At the end of 20 years, it becomes 1,946. And in 30 years, 8,585 rupees. A massive difference. That is the power of compounding and power of longevity. If you let your money run for a long period of time in good companies in equity market, outcome can be disproportionately high, favorable in your favor. So equities are obviously better way to build wealth. Yet, as per RBI data, 90% plus of Indian household savings are locked up in real estate and gold, physical assets, basically. If you look any developed country, it is completely opposite. 60-70% is in financial products, and balance will be in other asset classes. But in India, it's all locked up in physical assets. So it's a high time we Indians start to move out from physical assets and start investing in equity market. Now, obviously, it's easy said than done. Invest in equity market. It's not that simple to make money in equity market as well. So just simple facts. Did you know? 50% of stocks listed in BSE 500 a decade ago are no longer in index. That means they have lost favor. The businesses have collapsed and they have moved out of BSE 500. Most likely, many of them have burned capital. Investors have burned money in those stocks, which has moved out of BSE 500. 85% of stocks listed in BSE 500 have failed to give a rate of return above 15% per annum over the past decade. Again, these facts are something really eye-opening for me. We always say equity, but not all equity or all shares deliver return. In fact, 85% don't even deliver 15%. 70% of the companies in Nifty 50 typically fails to generate return on capital above cost of capital. Being CA, all of us know what is return on capital employed, ROE, and how important it is.
And if companies don't deliver ROC more than cost of capital, then there is a big question mark. There is an opportunity cost. If someone is running a company and they're not able to deliver more than cost of capital, then what's the point of running that business? Now, as an investor, why should I invest? And 70% of the companies in the market don't deliver return on capital employed more than cost of capital. Despite all this, if you look overall, equity market has delivered $1 trillion. $1 trillion of wealth has been created in Indian equity market over the last decade. That's a seriously huge amount of wealth that has been created by equity market. But that 1 trillion is not spread all over the companies. It's highly polarized. Only 16 companies account for 80% of the wealth that has been created by Nifty over the past decade. So there are only handful of companies which are delivering solid returns, whereas most of the rest are delivering average or in fact burning investors' wealth. So that's why, and that's why investing and making money in equity market is not easy. It's not simple. One should invest in equity market, but one should know how to invest. That's very, very important. And if you see, our country is getting very, very polarized. So the way we make money through equity market is also changing. It's not that you can just deploy your money anywhere and you can make money. And again, it's important to understand why our India is getting polarized and how, as an investor, we can take benefit out of it. So in fact, at Marcellus, we had published a note, and that note was, or the data of that was taken up by economists, and they have published, in their magazine. And the Economist is one of the world's most renowned, most popular magazine. So our country has changed a lot in last 10 to 15 years. A lot of things has been done, structural changes has been done by government of India, because of which the way businesses are run is changing, and because of which our country is getting polarized. Big and strong players are becoming bigger and stronger at the expense of smaller and unorganized players. So what are the changes that has happened, in last decade or so? So if you see, our national highways has doubled, so I'm sure all of us have traveled, across highways. It has becoming much better what it used to be 15, 20 years back. The broadband connections has gone up multifold, 48% compounding. Airline passenger traffic, no matter when we go to airport, it's always brimming with people. 16% compounding of airline passenger traffic, and because of Jan Dhan, now almost every household today have bank account. That's a great outcome. And on top of it, government introduced, Aadhaar, and they seeded both Aadhaar and Jan Dhan. And then government introduced GST. Now being, all of us are CA, we know what GST and has done to our country, to our economy. Every single month, we are seeing collections are going up. The net of GST is spreading far and wide. And people, the companies, the firms which are avoiding taxes now are getting into GST. For the first time, our country has become one country where organized player, big player can sell their products anywhere without any check post, without any paper, bureaucracy. And lastly, the SaaS, the technology. Just to give you a simple example, Marcellus is a 5-year-old company. We are using a SaaS product called Salesforce. Bajaj Finance, which is 1,000 times bigger than Marcellus, are also using Salesforce. So a company 1,000 times smaller is in position to use same technology which a large player is able to use. That was not possible 15, 20 years back. A large player would use SAP, whereas smaller players would be using various ERPs, to run their businesses, and they were not able to get maximum economies of scale. They were not able to get the best outcome from the business. Now, because of this, what's happening, on the chart on the right, you can clearly see how our country is getting polarized. In a sense, the top 20 companies are accounting for 60% plus profit that our country is generating as a whole.
right? When we say a country as a whole, we have taken 3-year average profit of 20,000 private and public companies. So for example, just to give you an example, HDFC Bank and Limited, a merged company, today is accounting for almost 10% of the total PAT generated in the country. That's how our country is getting networked, and network profits are getting consolidated in the hands of few companies in each sectors. And again, this is not something very, very unusual. That's how any country, whenever any country grows, that's how it happens. That happened in America, that happened in Japan, that happened in Korea. And as an investor, we can use it to our advantage to identify such companies, invest in such companies, invest in equity market, and grow our wealth, as those companies marches ahead. Now, as I mentioned, it's easy said than done. Why people are not able to make money? Why are people not able to make money in equity market? Investing is all about keeping it simple and avoiding doing stupid things. What is the ideal behavior of any investor? Ideal behavior, as shown on the chart on the left hand side, ideal behavior is to sell at the high and buy at the bottom, right? That is the easiest thing. सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो. But because of noise around us, we are not able to control our behavior. We are not able to control our emotion, and we end up taking wrong decision at wrong time. And when I say noise, what are the noise? Noise are, news channels, newspapers, WhatsApp, social, talks on equity market, on investing, experts comment, so-called experts, thought process, they are always giving their free advice. That are all noise. And because of that, what we end up doing, most of the time, we end up doing buying at high. When markets are rallying, when stocks are up 20, 30, 40, 50%, there is fear of missing out, FOMO, as you call it. We enter the market, and unfortunately or fortunately, most of us enter the market. There is a correction in the market. We lose our patience and we sell at the bottom. And that cycle continues. That fear and greed continues, and we are not able to, make money out of equity market. My grandparents, my fathers used to say, equity market is satta, stay out of it. Why? Because of this exact reason. We are not able to control our emotion. We don't invest understanding the company's business. Basis tip, basis social media noise, we invest, we exit at wrong time. And hence, the result is subpar, right? The results is subpar. 50% of investing is all about identifying great companies, and 50% comes from controlling our emotion, taking disciplined approach of investing. But that is something most of us end up not doing. So if you see, what are the simple ways to invest in equity market? Most of us know it is through mutual fund. You invest in mutual fund. Mutual fund has done reasonably good job. Invest in mutual fund, SIPs are there, or even better, invest in index fund. Index fund is nothing but replica of the underlying. So for example, Nifty 50 index fund is nothing but replica of Nifty 50 stocks in the same proportion. So whatever Nifty 50 delivers, the index fund will also deliver exactly same, less a very small cost, 5-10 paisa. So index fund scores much better over mutual fund in that aspect. So that's an easy way. Or the other way is to identify good fund managers, advisors, like Marcellus. There are many other advisors over there. You have to do your diligence. You have to understand their philosophy, the track record, the team. And if you believe them, start working with them. Or other ways to do our own research and invest directly. But obviously, the basic remains the same. Buy on dips and not on tips. That is a lot of people do. They invest basis tip. Don't do it. The easy money in equity market, it's very difficult to digest. We make money through tips. There is greed, and then we again invest through tips. And third, fourth, fifth round, there will be one clean sweep, and we will end up losing everything that we have earned over the years. So rather than investing on tips, invest on dip. Buy and hold, and not panic and fold. And that's a beautiful, beautiful phrase
we have to buy and hold, and people end up investing short-term money. You have to invest long-term money. If market corrects, buy more rather than worrying. Invest more and don't fold up, don't pack up. That is what people end up doing. And as Warren Buffett says, prefer time in the market and not timing in the market. Now, that is something that most of us try to do. We try to second guess the market. We try to do bottom fishing. We try to invest at the bottom, and we try to exit at the peak. That is almost impossible. Honestly, I believe if someone could have done that, he would have retired by now. If Warren Buffett couldn't do, we also can't do. So rather than timing, you focus on time spent in the market. In fact, I have prepared an Excel file towards the end. I will show that, where I'm trying to show how the time spent in the market is so critical. How we can create a lot of wealth by remaining invested in the market. Now, moving on, if someone wants to invest on their own, rather than investing through mutual fund or investing through index fund, someone has the knack, or someone wants to manage their money on their own. And honestly, I believe in country like India, the best thing is to manage your money on your own, rather than depending upon third party, because there at times third party interest and your interests are not aligned. So if you, and being CA, we can naturally, we understand annual report, we understand balance sheet, we understand numbers. So it's easy for us, to comprehend the business. And if we have the knack and taste, we should manage money on your own. But it's important, to have, create some principles, for ourselves, and then follow it. At Marcellus, what we have developed, what I have learned, over 18 years of investing, I'm trying to share it, pick what suits you, and this is that, you prepare your own framework. What framework we use is to buy good companies. That is very, very critical. And when I say good companies, what do we mean? It means companies whose businesses are very, very strong, and that you can obviously see through their financial numbers, through return on capital employed. And as I have shown in the earlier slide, 70% of the companies are not able to deliver return on capital employed more than cost of capital. Those are not good companies. Those are below average, or I will say many of them are poor companies. If you're not able to deliver returns, our return on capital employed more than cost of capital, be circumspect, be skeptic, and do increase your diligence on those companies. Because the difference between ROC and cost of capital is nothing but free cash flow. If company is not generating free cash flow, it's a big question mark. It's a red flag. So look at the return on capital employed. Consistently, they should be above cost of capital. Solid financial conditions, again, they should be debt-free, profit, volume, they are showing volume growth, revenues are going up, a company are profitable, that profit is being converted into cash, and that cash company is reinvesting back in the business. Again, that's very critical. If companies' growth avenue is over, then they will end up giving it back, all the profit back to shareholders through dividend. We don't want to invest in such companies. We want to invest in companies who are able to identify next leg of growth, and they reinvest back in the business. And last but not the least, clean accounts. That's where our role as CA, chartered accountants, comes in picture. For us, it's little bit, I will say it's more easier to understand, comprehend whether company's books of accounts are or not. And we had published a book, towards the end, I will show you the names of the book. We have shown 12 accounting ratios that we use and we run past on companies' last 10-year financials to give ourselves comfort that company books of accounts are clean. P&L, balance sheet, cash flow, it makes sense. And lastly, we pick up phone, we talk to dealer, distributor, vendor, supplier of those companies, and get a feedback whether companies' practices are clean, promoters, management don't shortchange minority shareholders. I will say this basic diligence is very, very easy for most of us. We have done it, and we keep on doing it day in, day out. And obviously, one has to take out time to do it. Second thing is to
identify if you are able to identify good companies, great. Then we have to look at the price that we are willing to pay. Obviously, idea is to identify great companies, good companies available at cheap or at fair price. And obviously, there are various ways to do it. Most common is DCF, using free cash flow. Again, I will not dwell too much into it because all of you are aware of it, how to do DCF. The only difference, that I find the way people do what we have been taught and that we do in Marcellus is that we don't look at DCF or the company's business only for 5, 7, 10 years. That is what in general the practice is. A forecast company's business for 10 years and then do a terminal growth rate. But a great company doesn't have only 10 years of life. That's where we have to do diligence, and if we can with conviction we can say this company doesn't have 10 years but has 30 years of life, and then we do DCF, then valuation will come very, very different. So we need to look at DCF holistically and not do just for the sake of doing it. And obviously there are other ways of looking at the companies as well. And third is very, very critical, mitigate human biases, make it a process driven approach rather than discretion. कि मुझे लगता है, ऐसा मेरा thought है. No, let's make it a process and avoid human behavior. What is human behavior? Just to give you a simple example. There is a beautiful phrase by one of the greatest fund manager of Fidelity. Fidelity it's a US based fund. I'm sure all of you have heard. Manages billions and trillions of dollars. There's a fund manager called Peter Lynch. He says we water the weed and we cut the flowers. We water the weed and we cut the flowers. What does it mean? We invest in a good company. The company does well. It delivers 25, 30, 40, 50% return. And the common thought process is book profit. Paisa nikal lo table se, and we book profit, we exit out of the stock. And once we exit out of the stock, then chances of re-entering that stock is difficult. If we sell stock at 105, then chances are we will not enter that stock if it is more than 105. We say, "Are 105 पे बैठा है, बेचा है, how can we buy at 107, 110, 120?" And hence we end up not buying or re-entering in that stock. Whereas we water the weed, what does it mean? We end up investing in not so great companies. The prices have fallen, 100 becomes 90, and then we realize that it's not a great company, businesses are weak, managements are corrupt. Despite that, we continue to hold the stock. We say, no, I have invested at 100, now I cannot sell at 90. So we patiently remain, stay put, we do nothing. And then 3 years, 5 years, 10 years down the lane, 90 again becomes 100. We sell the stock and we became happy, that we have not incurred capital loss. But we always forget that time is money. If we had realized that we have made a mistake, we should have immediately sold, no matter what. Book your losses, cut your losses at 90, at 80, and then reinvest back that money in a good company, great company, which can compound your wealth, your losses, and then compound your wealth. That same 80, 90 rupee, 3 year, 5 year, 10 years down the lane could have become 150, 120. So avoid noise, avoid biases, create a process, and basis that, we invest. And lastly, very, very important, invest long term. There is no shortcut, in our profession, in our life, in investing. There is no shortcut. Time is investor's friend. Longer the time frame, lower the volatility. Let me give you an example of Warren Buffett. Today, Warren Buffett is 90 year plus. Today, his net worth is anywhere between $100 billion to $110 billion. 70% of his net worth comes only from 5 stock. Example being Coca-Cola. He has never sold Coca-Cola. He has been holding on to that stock for 50 years plus. And why does he say invested? He says, I am a business owner. I am not an investor. I will not sell unless anything changes fundamentally in the business. Now, we can very well imagine, what would happen, in those 50, 60 years. Whilst Warren Buffett continued to remain invested, World War I, II, COVID, US government changes, recession, inflation, wars, interest cycle, 2008 correction, anything and everything in the business
micro has changed, but Warren Buffett continued to remain invested. And today he is one of the richest man in the world. So that is the power of holding long term. Again, I'm not saying one should have 50, 60, 70 years of time frame. Not necessarily everyone can have that, but at least have 5 years of time horizon. 3 years is minimum and 2 years as buffer. Why 2 years as buffer? Because something happens, war erupts or situation like COVID. So that's why, give that investment a buffer of 2 years. And we believe 5 years is a reasonable time frame for any cycle to turn and for us to recover from losses and make money. So again, just to give you a simple example, if someone had invested at the peak of 2008, right, before Lehman Brothers crisis, and stock had corrected, most of the market had corrected 70%. Most of the good companies, Titan, TCS, HDFC Bank, all good companies corrected anywhere between 30-40%. The person, at that corrections had not panicked and exited and continued to remain invested. They not only would have recovered all the losses in next 5 to 7 years, they would have made at least 3 to 5x return, subject to they had invested in clean quality companies with strong fundamentals. Obviously, if someone had invested in cyclical stocks, in crook companies, they would have lost everything. But if someone had followed basic principles of investing, they would have made money, despite correcting by 30, 40, 50%. So it's very important, to create your own principles. Again, idea of me showing is not to tell that these are the only principles. You can pick what you like, but create some principles and then follow it. And then lastly, again, when I say principle, another approach is to create checklist. If you see in our daily life, many times we create checklist. When we are going out for shopping, we create checklist. If we look at aviation, pilots, they have books, they have checklist, and basis that they fly. Everything and anything relating to flying, it is noted down in the checklist. Again, whenever a surgery happens, there is a checklist. Before operation, during operation, post operation, there are checklists, and there is a massive positive outcome of following checklist. And the same one can do for investing as well. Have your checklist and make sure before you trigger the button, before you buy, you tick all those checkbox, like what we do during our audit days, what we learned during our audit days, during our articleship. There is a checklist and we have to make sure we tick. That is something that comes naturally to chartered accountants. And what are the investment rules that we follow at Marcellus? And again, these are the rules that we follow. Anyone can, pick and choose what they like, and they can add what they feel is more relevant or important for their style of investing. Again, clean accounts, low leverage, company. We don't like companies which take too much of debt to grow. Consistently profitable, select quality stocks, look at the promoters, look at promoters holding. Higher allocation to undervalued companies, companies which you feel are great, but market is not understanding or valuing them, invest more in those stocks. So it's very, very important to have your checklist and to follow that checklist, and then, avoid noise in the market. That's really important. Now, it's always better, a lot of people, when they invest, they end up taking bets, they end up doing sattas, that is not correct. You need to create a portfolio for yourself. Portfolio ensures you spread your risk. That is really important, spreading your risk. But spreading too much also doesn't make sense. When you're creating a portfolio on your own, or you're investing through mutual fund, having, investing in 2-3 mutual fund makes sense. But if you end up investing in hundreds, 20, 30, 40 mutual funds, or you end up investing in hundreds of stocks, it doesn't make sense. Because diversification beyond a point loses its meaning. It only becomes dilutive. But it is important to have a portfolio. And this example beautifully shows the power of portfolio, right? Having a concentrated portfolio, 15, 20, 25, 30 stocks. Over here, what we are trying to show, that if you have 200 rupees and you decide to invest across only 2 stocks, stock A and stock B, and you give
100 rupee allocation to each stock. And stock B, unfortunately, turns out to be a dud. You end up, the stock ends or the company and blows up, and that 100 rupee becomes zero overnight, right? It's a big setback. 100 rupee out of 200, 50% has become zero. But through stock A, you're able to identify a great company. And over 5 years, 100 rupee becomes 500. Overall portfolio, 200 becomes 500. And overall, over a 5-year, you end up compounding 20%, despite losing one stock, despite losing 50% investment, yet you end up compounding at 20%. So idea of this, of this slide is to tell you, create a portfolio of good companies, 15, 20, 25 companies, whatever you're comfortable, but not more than 25, 30 stocks, And over there, you need 4, 5, 6 superstars, those 5, 6 stocks will deliver super returns and will pull overall portfolio returns for you. And obviously keep on doing diligence on that stock, on those companies, and to make sure fundamentally nothing has changed. Don't worry too much on returns. Over time returns will follow, because ultimately it is fundamentals which drives share price return. Again, there is a beautiful saying, behind every stock there is a company, and behind every company there is a business. Focus on business, not on return. Not on share price. Share price return is byproduct of business. If business is great, promoters are honest, management is strong, returns will follow. That is very, very important. Now, my colleague, my co-partner, Saurabh Mukherjee, Rakshit, they all are founders of Marcellus. My colleagues. We have written books. These are the 3 books. I will highly recommend all of you to please read books. One way of investing is to make mistake and learn. Other is to learn from others' mistake and avoid that. I prefer the second one, where I don't make mistake. I learn from others. And these 3 books will help you. This 1,000 rupee, 1,200 rupee for 3 books is worth investing. Please read and also give it to your kids. That is one thing that I always feel our education system lacks. Our education system teaches us how to make money, but it doesn't tell us how to invest. And as Warren Buffett says, if our money doesn't compound whilst we sleep, we will have to work till I die, right? So investing smartly is very, very important. And if you do, and again, I know most of us are very, very busy. If we don't have time and don't have time to read all the 3 books, or many of us don't have a habit of reading books, then at least push yourself and read. If you can read only 1 book, then I will highly recommend Coffee Can Investing. Please read the book, Coffee Can Investing. And very quickly, I will give you just in 2-minute summary, what is the background or the meaning of Coffee Can Investing. Why this name? This name is not something that has been coined by us. This name was coined by a gentleman called Robert Kirby. Robert Kirby was one of the best fund managers of a fund house called Capital. Capital Group is a America-based fund. They manage over $1 trillion. Our Indian economy is 3 trillion. That single fund single-handedly manages $1 trillion in America. And Rob Kirby was one of their star fund managers. And the story goes like this. One day, a lady comes to Rob and says, my husband died a long time back. And because of you, he was your client. And because of you, he has left us a huge fortune. And she said a number which surprised Rob, because that was not the kind of return which he had generated. So on his request, the lady shared her dead husband's statement. And on analyzing it, he was shocked. Why? Because on Rob's recommendation, the gentleman purchased shares, but on his recommendation, he never sold any because he was dead by such time. And that portfolio remained untouched over a long period of time. And one of the stock in that portfolio was a company called Xerox, right? Rob, like any fund manager, he identified a great company. He made money, he doubled, tripled, whatever, and he sold, he exited the stock. Whereas the investor over here, because he was dead, his portfolio remained untouched. And one of the stock, and the Xerox, he invested $10,000, and over time it became $1 million.
And that's where Rob realized power of compounding, and he named this philosophy coffee can investing. Why? Because in earlier days, where people had any values, they would have put it in empty boxes and hid it somewhere. Now, that's why that philosophy coffee can investing. Invest in great companies, invest in equity market, and forget about it and let it grow. Now, that is in a nutshell that I had to share. Before I open for Q&A, I will just share a simple Excel file, and I'm more than happy to share it with Amreen, and she can share with participants. I will highly request all of you to please have a look at it and show it to your children as well, because that is very, very important. Because I know I became a CA at age of 22 and I had no clue on investing. I had no clue the power of compounding. Over here, I hope the Excel file is visible. Okay. So over here, this is very simple Excel file. So in general, what is the thought process? When we start our career, our salary is so low, we earn so less. What will happen? 1 lakh, 2 lakh, 5 lakh bacha ke, it will not change my life, right? That is the common thought process. And obviously, many of us even don't know equity investing, what it is all about. But now, given that if we know and we are okay investing in equity market, now let's see what is the power of compounding. Over here, I have assumed a person saves 20,000 per month and he invests every year 2,40,000 rupee. I think in today's world, it is very much doable. 2,40,000 rupee, 20,000 per month every year. Assuming the person has becomes a CA or becomes a professional, or he starts investing at 22. If not 22, you can start with 23. You can delete 22 ka 2,40,000 rupee, which is over here in cell B5, right? And you invest 2,40,000 every year till you become 60, right? So over 40 years, you invest less than 1 crore rupee. Second, I have assumed that you will compound in equity market at 14%. I am not taking very, very aggressive numbers of 18, 20, 25, 30. No, you are compounding at a very reasonable rate of 14%. And also I've assumed that your investment remains constant at 2,40,000. You're not increasing our investment. If you do it, the outcome is even better. Now let's see what happens. You invest at the age of 22, like that. I've created, you are investing every year. Now let's see what is the outcome. When you turn 60, that 2,40,000 every year that you are investing, that is compounding at the age of 14, becomes 28 crore. At the age of 60, that becomes 28 crore. At the age of 62, whereby most of us starts thinking of retiring, or passing on the baton, we have 36 crore in our bank account. And remember, this is all clean money. Everything is in our name. 10% long term, 15% short term. And this is a serious amount of wealth, 36 crore. Remember, Warren Buffett had compounded at 22% for 60 years. I'm not saying let's wait till that time. We can compound at that rate, even at 14%, or let's assume not even 14. Let's assume 12%. Yet we will end up less than crore we are investing over time, and we are getting 20 crore. Doing nothing much, simply investing in equity market, in good, clean, quality companies, or through mutual fund, through advisory products. We are able to compound. So, I can say for myself, I have been late, but not too late. I have started investing for myself, for my retirement, for my 2 young daughters. And I will request to my fellow CA colleagues, to my brothers and sisters, start looking at your personal finance. We do it for our clients. We manage their books of accounts, but we don't find time to look at our own personal finance. Let's do it. Let's start doing it. That's broadly that I wanted to cover. I'm more than happy to take any specific query that anyone might have. Thank you, Ritesh. Thank you. It was a wonderful session from your end. So we have 2 questions by now from the participants. I'll take it one by one.
So the first question is, if working capital margin is a part of cost of project and bank funding is also part of means of finance, then isn't bank funding working capital margin? So I'm happy to share, but this is not nothing to do with personal finance, right? It is more technical. I will not like to give this, because this is not my expertise subject No, domain. So I will avoid giving it. I don't want to give answers which I'm not 100% sure. So it is not that's personal finance. perfectly fine. That's perfectly fine. And the second question which we have is, the person has asked for some good companies, the detail or the stock details, wherein the participants can invest upon, you know. Sure, I'm again, I will highly recommend, I will give the names, but I will highly recommend you can visit our website, marcellus.in. All our portfolio companies are all available. It's there in public domain. We don't hide anything, because we always believe knowing the names are not secret sauce, but understanding the company's business and continue to remain invested is the secret sauce. So through our PMS, we have large cap, small cap, mid cap. And recently, we have also launched a advisory product called Meritor Q, where by paying a 10,000 rupee advisory fee, investors get all the advice from us. You can just, and 10,000 means nothing, not even 1,000 rupee. But to name, we don't have to go too far. Titan, TCS, HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank, Bajaj Finance. Those are large cap stocks. And a lot of people say, अरे ये तो सबको पता है, मेरे दादाजी भी डालते थे. But you look at the company's business, the business continues to grow at 18-20%, and share price continues to grow at that rate. That is large cap. And in small cap, there are a lot of names, Alkyl Amines, GMM for dealer, Divi's Lab, Dr. Lal Path Lab. Again, I will say, don't look at share price return, look at company's business. Businesses are good, you will make your pound of flesh. And again, just because I am saying, just don't go buy it blindly. As I mentioned, buy on dip, not on tip. All the names, all our research is available free of cost on our website, through our newsletter, through our webinar. Please spend some time, listen to it, and then do your basic diligence. You don't have to go as deep as we go, because for us, it's bread and butter. But being a CA, we can spend some time on weekends to do some basic diligence on those companies, financial at least, and then you can take call. And obviously, if you want to reach out to me, please feel free to drop me an email. That is the best way. At times I don't pick calls, I'm on calls. I will share my number as well. But the best way to reach out to me is through my email ID. That is Nitesh, NITESH @marcellus.in. MARCELLUS.in. Nitesh @marcellus.in. Or you can WhatsApp me. I will try to revert. There might be some lag, but definitely I will try to get back to you. My mobile number is 90000156222. 90000156222. So please feel free to reach out. More than happy to share. But again, I will recommend, please spend 1,000 rupee, buy that books. Go through our website. It's all free of cost. You will get the names, but names are not the winner. Winner is the philosophy. Winner is to remain invested in equity market for a long period of time. Thank you, Nitesh. So we don't have much questions, but on behalf of CP committee, I would like to thank you. Thanks a ton. And being a chartered accountant, we many times forget that we have to think simply, because we are more into the legal aspect, taxation aspect, and we just try and find out the issues rather than the solutions more. So you gave us a very good ideology that investing is all about keeping it simple. It's all about compounding. It's all about just thinking about it. Also, one very good aspect which I could understand from our discussion is we many times read notifications and circulars daily basis. But for us, if we want to read something for us, for our investment, for our clients' investment, we forget about it. So thank you very much for enlightening us on this aspect. And I would also like to thank all the participants who have attended the CPE meeting. And we would like to see the similar line of enthusiasm in the upcoming sessions as well. I would like to hand over to Pragya and the CP committee members. Thank you.
Thank you so much.